Namaskar, I am Dr. Puneet Kochhar. I am a fertility specialist at Elixir Fertility Center, Gujranwala town in North Delhi. Today I will be talking to you about symptoms that a woman feels after an IVF cycle. IVF एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू एक कपल नहीं जाता, एक फीमेल नहीं जाती, एक पूरी फैमिली जाती है. So the whole family has its expectations on that one day beta HCG result that they've been waiting for so long. When a couple starts an IVF cycle, they've had months of mental preparation before they start the cycle. Then, in the first half of the cycle, the female gets a vast number of injections, after which an egg collection procedure is done. We create the embryos after the egg collection and we put them back inside the uterus. This procedure is called the embryo transfer. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पेशेंट को कुछ दवाइयाँ कंटिन्यूसली लेनी होती हैं फॉर द नेक्स्ट 12 to 14 days एंड देन वी डू अ बीटा HCG टेस्ट और अ ब्लड टेस्ट टू कंफर्म वेदर अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट. इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या है जिससे पता चल सके कि प्रेगनेंसी ठहरी या नहीं? वेल, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है जिससे इन 2 हफ्तों में आप प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसीजर. लेट नेचर टेक इट्स कोर्स. Let it happen on its own. The only thing you can do during these 2 weeks to improve your success rate is to relax, be stress free, be happy, sleep well. These are the things which will help you improve your success rate. कुछ सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स हमारे कॉमनली हमसे पूछते हैं कि हमें ये फील हो रहा है, क्या इसका मतलब है मैं प्रेग्नेंट हूँ, या हमें ये दिक्कत आ रही है, क्या इसका मतलब है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ. आई विल डिस्कस दीज सिम्टम्स विद यू. सो टू स्टार्ट विद वजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग. दिस इज द मोस्ट sinister complaint that we get, which actually scares us as well. A little bit of spotting can occur because of various reasons. ट्रांसफ़र के बाद हम कुछ वजाइनल मेडिसिन देते हैं इंसर्शन के लिए. एक जेल होता है, प्लस देर आर सम पेसरीज विच कैन ऑल्सो बी यूज इंस्टेड ऑफ द जेल. सो वेन यू इंसर्टिंग दीज इन द वजाइना, inadvertently you can cause trauma to the cervix or to the vaginal tissue, which may cause a little bit of spotting or bleeding. So bleeding may not necessarily be from inside the uterus, it can be from the cervix as well, जिसका IVF के success rate पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Sometimes a little bit of bleeding can even occur from inside the uterus and we call it implantation bleeding. Again, if you've had spotting or a little amount of bleeding, brown or red, it does not mean that the IVF has failed. We do not know whether the IVF has worked or not until we do that beta HCG blood test. So please do not feel hopeless if you start bleeding, but just contact your doctor and follow their advice. The second important symptom is cramping. Abdominal cramps या lower abdominal pain, जो कि lower abdomen, backache, thighs में pain, ये common complaint है जो patients को रहती है. The important thing is that you understand that cramping also does not mean that you're not pregnant. It could be very well a part of the normal procedure. So if you're having abdominal cramps, do not panic. Let your doctor know and continue the medicines. The most important medicine that you're consuming after your embryo transfer is the progesterone. प्रोजेस्ट्रॉन की दवाई आपको वजाइनल सपोजिटरीज, पेसरीज या जेल्स के फॉर्म में भी दी जा सकती है, या आपको ओरल कंजम्पशन के लिए दी जा सकती है, या इंजेक्शंस के फॉर्म में दी जा सकती है. आपको जिस भी फॉर्म में प्रोजेस्ट्रॉन दिया गया है उसकी नॉर्मली डोज थोड़ी बढ़ा दी जाती है यदि आपको स्पॉटिंग या पेन की कंप्लेंट रह रही हो. सो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए एंड प्लीज़ डू नॉट पैनिक. The third important complaint or the symptom that patients normally feel is nausea, bloating. Now these are very non-specific complaints. They can occur because of the heavy dose of medicines you're taking. They can occur because of something you've eaten. So nausea होना या giddiness होने का मतलब ये नहीं है कि आप pregnant हैं. Similarly, heaviness in the breast. A lot of women feel that the breasts are getting heavier. Sometimes they may be sore and painful to touch as well. These can be symptoms of an early pregnancy, but they can also occur because of the medicines that you're consuming. So these symptoms do not necessarily mean that you're pregnant. Also, अगर आपको ये symptoms हो रहे हैं और कुछ दिन बाद कम हो जाएं, ये मत सोचिएगा कि pregnancy ठहरी थी और अब नहीं चल रही. They have absolutely no connection with your beta HCG result. The next important symptom is vaginal discharge. Commonly, a lot of patients tell us that they're getting some amount of vaginal discharge after the embryo transfer. Now, this most likely is the medicine that you're inserting vaginally. जो दवाइयाँ आप वजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं, ये कुछ हद तक बाहर लीक करती हैं, सारी दवाई absorb नहीं होती. So the little bit of medicine that comes out appears as a vaginal discharge. You needn't be scared of that. You need not need treatment for that.
The important thing is that you make sure that the discharge is not foul smelling. उसमें से बदबू तो नहीं आ रही, या आपको खारिश या इचिंग तो नहीं हो रही. अगर आपको इचिंग हो रही है या डिस्चार्ज आपको फाउल स्मेलिंग लग रहा है, then you need to inform your doctor because it may mean that you're starting an infection which can be treated at an earlier stage without affecting your IVF results. The next important thing that our patients feel after an embryo transfer is stress. अब स्ट्रेस जायज़ है, हर किसी को होगा आफ्टर एन एम्ब्रियो ट्रांसफर. इट इज़ अ बिग प्रोसीजर दैट यू हैड, और अगले 2 हफ्ते आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ घर बैठकर वेट करनी है. सो स्ट्रेस अपने आप आ जाता है. जिस हद तक हो सके कोशिश करिए कि प्रोसीजर के बारे में ना सोचिए. Go out, continue with your routine activities. If you're working, you do not need to stop working. If you are a housewife, please involve yourself in whatever you like doing. Continue your household activities. Take time to go out for a movie, take time to go out for a walk, get some fresh air, eat a healthy diet. Obviously, if you're going out during the COVID scenario, take the COVID precautions and do not eat food outside or do not eat unhygienic street food because that may cause a problem. Apart from this, there is nothing in those 2 weeks that can tell us whether you're pregnant or not. The happier you are, the better your result is going to be. So enjoy those weeks and be stress-free. If there's anything else you need to know, please contact us on the numbers given below. Thank you.